Welcome, students. In the previous part, we have discussed the rules of narration. Now, we will discuss if reported speech refers to assertive sentence or interrogative sentence or imperative sentence, then how we will change it into indirect speech. Now, we will focus on the assertive sentence. It means that when reported speech refers to assertive sentences, then what changes we will do when we are going to change direct into indirect narration. First rule: if there is no object after reporting verb, there it should be not be changed. Okay, if there is some object after reporting verb, then say is changed into tell, says to tells, and said to told. According to the context, said to can be replaced by replied, informed, stated, added, remarked, asserted, assured, pleaded, reminded, reported, or complained. This is the rule number one. Meaning is this: if reporting verb doesn't have object, in that case, simply reporting verb will be said. Okay, if reporting verb contains object, then we will change said to told, says to tells, say is changed to tell. These changes will take place. कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस शो कर रहा है तो इसमें पहला रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस केस में हम सेट को सेड ही रहने देंगे, टेल को टेल ही रहने देंगे। सेट को सेड ही रहने देना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उस केस में हम लोग से को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे, या कॉन्टेक्स्ट जो भी शो कर रहा हो रिपोर्टेड स्पीच, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, स्टेटेड, एडेड, रिमार्क्ड यूज कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर 2, पुट कंजंक्शन दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। अब असर्टिव सेंटेंस के केस में हम इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे डैट के द्वारा। So that is the rule in assertive sentence. Meaning is this: if reported speech refers to assertive sentence, in that case we will change according to these two rules. Now see the example. She said to me, I shall sleep now. Now here you see I shall sleep. I shall sleep. This is your what? This is your I shall sleep. This is your assertive sentence. When your reported speech refers to assertive sentence, in that case said to will change to told. This we have done. See, we will remove inverted comma with the help of that. The same thing we have discussed in the previous rule. So that is the way how you will do the changes, and rest of the changes we will do according to the rules. She told me that she would play then. Now see the second example. He said, my brother's marriage comes off of next month. So again here you see this whole sentence refers to assertive, or this sentence is an assertive sentence. Now said, it remains said. Why? Because reporting verb does not contain object. In that case we change, there will be no change in reporting verb. It will remain as it is. So he said. Again report inverted comma will be removed with the help of that. Why? Because our reported speech refers to assertive sentence. Clear? So he said that his brother's marriage would come off the following month. So that is the simple rule. तो हमने देखा
कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इन द फर्स्ट सेंटेंस यू सी रिपोर्टिंग वर्ब हैज ऑब्जेक्ट दिस वन, then we change said to into where? Told, and we remove inverted comma with the help of that. Why? Because reported speech refers to assertive sentence. तो हमको यहाँ ये समझना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सेट का सेट ही रह जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो उस केस में सेट टू को हम टोल्ड बना देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हम डैट के द्वारा रिप्लेस करेंगे। दैट इज द रूल। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। व्हेन reported speech is in interrogative sentence, what changes we will do? An interrogative sentence is meant to ask questions, therefore reporting verb said or said to is changed to asked. Said to change also be changed to inquired or demanded. So in the first rule, what we will do, we will change reporting verb into asked और इंक्वायर्ड और डिमांडेड वी कैन राइट। तो पहले रूल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे, सेड या सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, सेड या सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। दैट इज द सिंपल रूल। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट रूल नंबर 2। इफ क्वेश्चन इज फॉर्म्ड with the help of any of the helping verb like is, are, am, was, were, has, have, do, does, will, would, etc., then inverted comma are to be replaced by if or whether. This is the first case. If our interrogative sentence begins with helping verb, in that case we will remove inverted comma with the help of if or whether. अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, डू, डज, विल, वुड, एक्सेट्रा, तो इस केस में हम इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ या वेदर से रिप्लेस करेंगे। इफ़ द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ WH लाइक हु, हुज, व्हाट, whom, when, etc., it is also known as W family or how, then to replace inverted comma no conjunction is used. So अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है WH वर्ड से तो इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करते हैं WH वर्ड के द्वारा ही, उसमें कोई कंजंक्शन की हम यूज नहीं करते। तो हमने यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 रूल देखे। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है इज, एम, आर या हेल्पिंग वर्ब से, उस केस में हम रिप्लेस करते हैं इन्वर्टेड कॉमा को, इज, एम, आर को हम रिप्लेस करेंगे इफ़ या वेदर से। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है WH वर्ड से तो उस केस में हम इन्वर्टेड कॉमा को WH वर्ड के द्वारा ही रिप्लेस करेंगे, किसी कंजंक्शन को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। So this is the way how we can change direct into indirect in the case reported speech refers to interrogative sentence. Now see the example. Here you see the reported speech. Here you see the reported speech. Reported speech is our interrogative sentence. That is our interrogative sentence, and it begins with helping verb did. So we remove inverted comma with the help of if or whether. Since reported speech refers to interrogative sentence, that's why we replace we change set to asked. So your answer will be he asked me. Set to change into asked. Why? Because our reported speech refers to interrogative, and we replace inverted comma with the help of if. Why? Because reported speech is in interrogative sentence that begins with helping verb. So your answer is he asked me if I had purchased book. Now see the second sentence.
that is, the teacher said to him, why has he not purchased bag? So here again you see this, why he has not purchased book, that is given in interrogative sentence, but it begins with wh word. It begins with wh words. Meaning is this, that into this interrogative sentence begins with wh word. Why? Your answer will be, the teacher asked him. We will replace inverted comma with the help of wh. Here you see wh. Why we have used here why? Why we have removed inverted comma with the help of why? Because our interrogative sentence begins with wh words. Why? Okay. Why he had not purchased book? तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे इफ़ या वेदर से, और सेट टू को आस्क्ड लिखेंगे। दूसरा केस हमने देखा, अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है wh वर्ड से, तो उस केस में हम इन्वर्टेड कॉमा को wh वर्ड के द्वारा ही रिमूव करेंगे। इस सेंटेंस में हमने देखा, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट परचेस्ड बुक। सो दिस इज द वे हाउ वी चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट speech if our reported speech refers to interrogative sentence. Now come to next. If our reported speech refers to imperative sentences, then what changes we will do? See, remove reporting verb according to the sense of reported speech. Meaning is this, if our reported speech refers to imperative sentence and this sentence refers to order or suggestion or advice, in that case reporting verb will remove with the suggested or advised. Okay, in this way we do. Second, we remove inverted comma with the help of to. In imperative sentences, we will remove inverted comma with the help of to. Now third, replace reporting verb with the forbade if reported speech refers to negative imperative sentences. This is the third case. If our imperative sentence is in negative, in that case we remove reporting verb with the help of forbade. तो यहाँ हमने देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस को रिफ़र कर रहा हो तो इस केस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को इम्परेटिव सेंटेंस के सेंस के द्वारा रिप्लेस करेंगे। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा को हम टू के द्वारा रिमूव करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के केस में। अगर इम्परेटिव सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो इस केस में हम फॉरवर्ड के द्वारा रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिमूव करेंगे। That is the way. Now next you see the example. Now examples you see. The doctor said to me, take medicines regularly. So here you see our sentence. This is given in, okay, this is our what? This is our imperative sentence. Take medicines regularly. This is your what? Imperative sentence. And second, we see this take medicines regularly. This imperative sentence gives the sense of advice. So we remove or replace reporting verb with the help of advised, and we remove inverted comma with the help of to. So your answer is, the doctor advised me to take medicines regularly. ओके, सो इस सेंटेंस में हमने देखा कि टेक मेडिसिन्स रेगुलरली एक इम्परेटिव सेंटेंस है जो सजेशन को या एडवाइस को रिफ़र कर रहा है, और इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिमूव किया टू से। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन. My father said to me, don't play in the street. So when we focus on this, don't play in the street, this is your imperative
sentence, but it is in negative. So in that case, we remove set to or reporting verb with the help of forbid, and we remove inverted comma with the help of to. So here you see. So your answer is father forbade me to play in the street. The same sentence can be same narration, same direct narration can be changed to indirect in a different way also. Father ordered me not to play in the street. Don't play in the street, that also refers to order. So that's why we use here father ordered me not to play in the street. Okay. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फादर सेड टू मी में हम देख रहे हैं डोंट प्ले इन द स्ट्रीट दिया हुआ है, तो डोंट प्ले इन द स्ट्रीट क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है। तो इस केस में हमने रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड के द्वारा हटाया, तो फादर फॉरबिड मी टू प्ले इन द स्ट्रीट। इसी को हमने दूसरी तरह से भी चेंज किया, फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले इन द स्ट्रीट। सो हियर वी सी don't play in the street refers to order, so that's why we remove inverted comma or replace inverted comma with the help of order, and we remove inverted comma with the help of not to here. Remember, when your imperative sentence is in negative, then we remove inverted comma with the help of not to. याद रखेंगे कि जब भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, इस केस में हम इन्वर्ट कॉमा को नॉट टू के द्वारा हटाते हैं। सो दैट इज़ ऑल विच वी हैव टू डिस्कस इन नरेशन, द सेम वी हैव डन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, थैंक यू।